Write a research paper for publication. So it will start from the title, and all steps will be followed one by one. In title, you have just to mention the name or topic of your project or research. In abstract, you have to mention the field of study or the branch of study in which you have gathered some information or did some experimental verifications. In introduction phase, you have to introduce the problem first, that what is the problem. In this case, you are going to write about problem identification. Then you will then you will mention about its scope and the existed work related that. And in literature review, you have to explain each and every related research paper, or you have to cite a reference of a particular person or author which have done work on that relevant field already. In methodology, you have to explain each and every step of your method, for example, workflow of that your project and all these things. In results, you have to write the results of your project, that what you have extracted or what you have find out by doing this all research or public research or project. In discussion, you will give your own thoughts or perspectives on a particular research by using the facts and figures and some content. Then, in conclusion, you have to conclude your whole project into 7 to 8 lines. In acknowledgement, you will acknowledge your teachers, mentors, and anyone who helped you to build this project or article. And in the end, you have to quote all the references, related articles from which you have extracted the information. Appendices and bibliography are something that may or may not be added. Appendices are basically appendices conclude appendices में बेसिकली आपके पास होते हैं कि अगर आपने कोई पिक्चर्स यूज़ की हुई हैं अपनी इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर, तो आप वहाँ से उसको मतलब कोट करके अपेंडिसेस में लिख सकते हैं। अपेंडिसेस के अंदर आप इसके अलावा कुछ टेबल्स ऐड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन वाले, आप उधर उसको रेफरेंस कर दें, उसको एंड पे अपेंडिसेस में लिखते हैं। बिब्लियोग्राफी के अंदर आपके जो रेफरेंसेस के अंदर उसके आपके होते हैं, वो सारे आप उसको एज अ होल उसके अंदर जिस तरह साइटेशंस और आप उसकी प्लेस होल्डर्स करते हो साइटेशन के तौर पे, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपकी वो उसकी डिटेल्स होती हैं, वो आपकी बिब्लियोग्राफी के वो कब कोई कंटेंट कब रिसर्च में आया, कब उसको आपने रीड आउट किया प्रिंटेड फॉर्म में, फिर इसकी डीओआई क्या है, और डिफरेंट इधर आप बिब्लियोग्राफी में अपनी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल दिखाऊंगा जिसके अंदर ये चीज़ें मैंने की होंगी, ये सारी चीज़ें, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस चीज़ की। अभी हमारा था फायर डिटेक्शन अलर्ट सिस्टम, और सबसे पहले मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिखा। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने लिखा कि दिस स्टडी डिस्क्राइब द फायर डिटेक्शन सिस्टम दैट एम्प्लॉयज कलर एंड मोशन मॉडल्स डिराइव फ्रॉम वीडियो सीक्वेंसेस। तो पहली लाइन से ही हमें थोड़ा नो हाउ हो जाता है कि इसकी एब्स्ट्रैक्शन किस फील्ड में से है। और ये देखें, डीप लर्निंग इज अ न्यू नोशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसका मतलब है कि ये कुछ जो भी मैं कर रहा हूँ फायर डिटेक्शन, ये रिलेट किससे कर रहा है, एआई या डीप लर्निंग से। और कीवर्ड्स में भी मैंने मेंशन कर दिया फायर डिटेक्शन, मतलब कि फायर डिटेक्ट करेगा, और मशीन लर्निंग के मॉडल्स यूज़ होंगे, एचएसवी यूज़ होगा, और कंप्यूटर विजन यूज़ होगा, जिस पे हमारा ये कोर्स इंट्रोडक्टरी कोर्स जो है पाइथन का बेस भी कर रहा था। इसके बाद हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली एक पैराग्राफ, मिनिमम 1 पैराग्राफ आप उसका इंट्रोडक्टरी लिखते हैं स्टार्टिंग। उसके बाद एम या विजन कि इसको बनाने का क्या गोल्स, आपका पर्सपेक्टिव क्या था इसको बनाने का। फिर आप उसके अंदर मोटिवेशन लिख दें कि किन चीज़ों ने आपको मोटिवेट किया कि ये आप इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाओ। फिर आपने उसमें पर्पज़ लिखना है कि ये पर्पज़ इसका क्या है, ये कहाँ कहाँ पे मतलब यूज़ हो सकता है इस तरह से। स्कोप में भी आपने उसकी ब्रीफ एक वो लिखना होता है, पॉइंट्स में आप लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप पैराग्राफ में भी लिखना चाहें तो इट्स अप टू यू। नेक्स्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि बेसिक प्रॉब्लम आपको क्या है, ठीक है। उसके अंदर आप थोड़ा सा उसको एनहांस करें, एक्सप्लेन करें कि क्या इशू है, और आप 1-2 लाइन कंक्लूड कर दें कि आपका सिस्टम जो बनेगा वो क्या करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में
for example, after reviewing different papers related to our proposed topic, I sorted a few of them for writing my findings in different papers. तो ये एक मैंने मतलब ये ऑथर का नाम मैंने साथ में साइट किया हुआ था, तो एक इसके बारे में लिख लें, और उसके डेटा सेट कौन से थे, उसने ये डेटा सेट यूज़ किए, ट्रेनिंग उसकी इतनी परसेंटेज आई, टेस्टिंग में उसने इतने परसेंटेज की। इसी तरह एक और मॉडल था डायलेशन ऑपरेटर का, उसकी इतनी ट्रेनिंग आई, इतनी टेस्टिंग आई। उसके बाद प्रॉस्पेक्ट्स क्या थे, हमारे प्रॉस्पेक्ट्स क्या थे, उनके प्रॉस्पेक्ट्स क्या थे। इस तरह से आप डिफरेंट जो आपके 3 से 4 मैंने कोट किए थे, आप भी इस तरह कोट कर सकते हैं। प्रपोज सोल्यूशन या मेथोडोलॉजी के अंदर आपने अपनी मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करनी होती है, जैसा मेरी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क थे और कलर मॉडल मैंने ह्यू सेचुरेशन और वैल्यू यूज़ किया था। तो ये बेसिकली इसमें आप अपनी जो ह्यू सेचुरेशन वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, एक ब्लॉक डायग्राम बना दें कि आपकी ये स्टेप क्या है, कि इनपुट वेबकैम के थ्रू भी ले सकता है अगर रियल टाइम में है, और अगर डेटा सेट है तो उधर से डेटा सेट को एक्सट्रैक्ट करेगा। वीडियो है तो उसमें से फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट करेगा, पिक्चर है तो एज इट इज़ उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर देगा। HSV कलर मॉडल ह्यूज ड्यूरेशन वैल्यू करके अगर तो फायर डिटेक्शन हो रही है तो ईमेल अलर्ट सिस्टम भी, अलर्ट भी आपको आएगी और साथ में आपको अलार्म भी, एक बीप सुनाई देगी। और अगर नहीं हो रहा तो फायर नॉट डिटेक्टेड, तो वो ऑटोमेटिकली it will show that fire is not detected, so no email or alarm will be generated. In the next case you have to explain your color model and why you have used this and perks of using HSV, like why not others, why not RGB or CMYK. So in model you have to write how you will give the input, and in pre-processing you have to mention all different algorithms and filters. For example, and in feature extraction you have to write it what portion of the file or what portion of the picture will be extracted for applying the classification. In this classification you have to write some code about classification, that these are image with fire and these are non image with no fire. And the next we have results, and this is the result, that distribution of fire and non-fire images. And the next portion I've used a pie chart to plot the training and tracing. Basically, it's suppletion of data that has been written in data collection and data collection and implementation. So I have took 79.2% for training purposes and 20.8% for its testing purposes. Now we have model summary, that model summary is generated using parameters, different number of parameters, and we have different layers in our neural networks. So if in convolution neural net, we have max pooling and denser, flatten, and different types of, and these are all the parameters that are being implemented in this. And email alert, so, and this is the code in which it is giving the dimensions of the image and the predicted labels of the particular picture or input. And for live detection I have used a matchstick, and as I burnt it or enlighten it in front of the camera, it will show a beep. And here is a calculation of training and testing. And this is the basically plotting of these matrices. And in the end I have concluded the whole topic, and afterwards I have explained future work, that how I see it, or how it seems to work with more efficient and the future work. At the end I have mentioned all the references from where I have extracted some information.